राम जी ने कोई पट्टा नहीं लगाया था, कृष्ण ने कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया था कि ये बोर्ड लगाने से जिंदा रहेंगे, गौतम बुद्ध ने कोई ऐसा पट्टा नहीं लगाया, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया, मगर वे फिर भी जिंदा हैं। आपको और मुझको नाम मालूम है। और संसार के 27-28 देशों में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच जिंदा है, मरे नहीं। शरीर मर गया पर व्यक्ति जिंदा है। और आप भी जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रह सकते हैं साधना के माध्यम से। क्योंकि राम ने अगर 13 साल तक जंगल में रह करके उन योगियों सन्यासियों के बीच में साधना सीखी, अगर सांदीपन आश्रम में कृष्ण ने साधना सीखी, अगर भगवान बुद्ध उस साधना के माध्यम से जीवित रह सके, मंदिर में जाना चाहिए, दान देना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है गृहस्थ के लिए। मगर इसके माध्यम से आप जीवित नहीं रह सकते, इसके माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, इसके माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। और पूर्णता नहीं है तो जीवन में श्रेष्ठता नहीं है। और साधना एक अलग चीज है, उपदेश एक अलग चीज है, राम नाम का मंत्र जाप अलग चीज है। हिटलर का नाम सुना होगा, एक बहुत खतरनाक राजा हो चुका, लाखों लोगों को कत्ल करवा चुका था। उसने प्रयोग किया था, उसने अपने देश के 5 मौलवियों को और 5 पंडितों को बुलाया और पूछा कि भगवान कैसे होते हैं, तुम्हारे खुदा कैसे होते हैं? तो खुदा कैसे होते हैं, ईश्वर कैसे होते हैं, ये तुम्हें क्या हिटलर तुम्हें कैसे बताएं? हिटलर वो राम के रूप में भी होते हैं, धनुष बाण लिए होते हैं, बांसुरी लिए हुए भी होते हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। उनका नहीं, खुदा तो वो भगवान तो एक ही होगा, 50 तरह के थोड़ी होते हैं, तो कपड़े अलग अलग पहने हुए हैं। आप ये बताइए कि खुदा कैसा होता है, ईश्वर कैसा होता है? उनका हम आपको समझा चुके हैं भाई, अलग अलग होते हैं, मुरली लिए हुए भी हो सकते हैं भगवान, और धनुष बाण लिए हुए भी हो सकते हैं, और भी कई रूप में हो सकते हैं, नटवर नागर भी हो सकते हैं, और दुर्गा भवानी जगदम्बा भी हो सकती है, हाथ में तलवार लिए हुए अष्टभुजा वाली भी हो सकती है। इनका ऐसा तो नहीं होता। मुझे आप सब मिलकर के ये बताइए कि राम कैसे होते हैं या ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर क्या है, वो कैसा होता है? एक ही तो होता होगा, ब्रह्म तो एक है ना। और तुम नहीं समझा सके तो उसको कैद में डाल दिया, उन 5 मौलवी को और 5 पंडितों को कैद में डाल दिया। केवल पीने के लिए पानी दिया गया, आटा खाना दिया ही नहीं। एक दिन बीत गया तो मौलवियों ने खुदा से इबादत की, एकदम से घुटने टेक करके या खुदा अल्लाह अल्लाह ये सब किया, उन्होंने राम 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 कृष्ण कृष्ण किया। वो दिन तो बीत गए, अब सोचा खाना आया ही नहीं। क्या हुआ, शाम को ये हिटलर साला बहुत बदमाश है, खाना ही नहीं दिया। दूसरे और सुबह हुआ, सुबह होने के बाद फिर भी नमाज पढ़ी, उन्होंने खुदा से भगवान से इबादत की। शाम हो गई, उस दिन भी दूसरी शाम होते ही वो 5 बार नमाज पढ़ना भूल गए, 2 बार नमाज पढ़ना शुरू किया। खाना तो आना चाहिए, बिना खाने के कैसे चलेगा? ये कोई तरीका हुआ है? हमने कोई पाप किया था सर, कोई गालियां दी हिटलर को, ये कोई तरीका है? उसने फिर पानी पिला दिया, पानी भिजवा दिया उस कैद में, रोज नहीं वगैरह कुछ नहीं। 30 दिन हो गए, अब वो चीखने लगे कि पहले खाना दीजिए, बाकी सब बात बाद में। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कैद क्यों कर रखा है, हम लोगों को क्यों कैद किया? वो 5 नमाज तो भूल गए बेचारे, अब रोटी करने लगे। इधर वो भी राम कृष्ण सब भूल गए, अब रोटी की रोटी तो दे कुछ। 30 दिन की रोटी उनको नहीं दी। शाम को सबकी हालत खराब, अब न वो अल्लाह से लड़ाई, न खुदा से लड़ाई, न ईश्वर से लड़ाई। चौथा दिन पूरा बीत गया और 5 दिन हो गया तो एकदम फर्स्ट। अब आंख बंद कर सामने गोल गोल रोटी दिखाई दी, उस मुसलमान को भी और उस हिंदू को भी। ये रोटी, ये क्या हो गया? खोल के बुलाया कि ईश्वर कैसा होता है? ईश्वर गोल गोल होता है, बिल्कुल फूला हुआ, बिल्कुल वैसा। उन मुसलमानों की भी ईश्वर वैसा ही हुआ, हिंदुओं का भी ईश्वर वैसा ही होगा। और अगर तुम्हारे पेट में रोटी नहीं है तो मैं तुम्हें कितनी साधना सिखाऊंगा तो साधना का शक्ल भी तुम्हें रोटी की तरह दिखाई देगी। तो पहले साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन के अभाव दूर होने चाहिए। जब जीवन का अभाव दूर होंगे तब जीवन में पूर्णता आ पाएगी। पहले तो ये आवश्यक, क्योंकि हम ग्रस्त में जिन साधु लंगोटी लगाई हुए होते, बच्चा कुछ नहीं, ऑलराइट मैं तुम्हें कह दूंगा अच्छा बच्चे कुछ नहीं, ये घर बार क्या है, चलो मेरे साथ, चलो और बात तक पर। उनका महाराज आप तो लंगोट लगाए हुए ठीक है, मेरे घर में बच्ची बड़ी हो गई, 24 साल की, शादी तो करे पहले, तुम्हारी बच्ची नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है दुनियादारी क्या कहती है। तो साधु को मालूम नहीं है, भगवान कपड़े पहनने वाले नहीं बता सकता कि ये घर में जो टैलेंट से लड़की 24 साल की हो गई तो कितनी परेशानी है, वो नहीं समझ सकता। या समझ भूख है उसको साधु नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो कहीं खड़ा होगा तो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, उनको घी पकवान खिला देंगे। हमसे मोटे ताजे लाल सुर्ख है चेहरा, हम तो घर पिछले हैं और चेहरा पिचका हुआ, उनका चेहरा पिचका हुआ ही नहीं। कोई साधु सन्यासी भूखा नहीं मर रहा है, एकदम लाल सुर्ख अंगार की तरह बैठे, और हम बहुत पीले पड़े हुए हैं, दुखी और तनाव में। इसलिए तो उनको मुफ्त की रोटियां मिल जाती है और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। इसलिए साधना का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो भी अभाव है, रोग, अगर जीवन रोग है, आपको बहुत ज्यादा खांसी, बहुत आपको ज्यादा दमा है, तो मैं साधना कितनी बताऊंगा, उस साधना में आपको सफलता मिल नहीं सकती कि साधना कर नहीं सकते। खांसी करेंगे कि साधना करेंगे?
घर में पुत्र नहीं है तो भी साधना नहीं कर सकता, एकदम एक टाइम से। लड़की बड़ी है तो भी साधना में आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। घर में पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है या पति लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और मैं कहूंगा अभी आप जाकर आंख बंद करके बैठेंगे, तो मैं तो पहले कहा था कि बगीचे मत जाओ, वहां कुछ नहीं सिखाते हैं। सर तुम ये बीच में आंखें बंद करके बैठ के दुकान जाना है कि आंखें बंद करके बैठ क्या करो तुम, ये लड़ाई झगड़ा। इसलिए साधना का उस श्लोक में, जो मैंने पहली बार श्लोक आपके सामने कहा, श्लोक का तात्पर्य है कि उस साधना के माध्यम से गुरु उनकी उन समस्याओं का निराकरण करे जो उनके जीवन के अभाव है। जो जीवन का आपके अभाव है वो गुरु दूर करे, तब वो गुरु है। उपदेश देकर के जाने वाला गुरु नहीं हो सकता है। वो तुम्हें उपदेश देकर के फिर और वो तो उनकी रोटी रोजी का साधन है। क्योंकि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हें 25, 50, 5, 10 रुपए भेड़ चढ़ाओगे, और तुम्हें 100, 200 रुपए भी चढ़े तो 8,000 रुपए महीना कलेक्टर को नहीं मिलता, मुझे तो मिल जाएगा और मुझे काम करना नहीं पड़ता। आप दुकान में बैठना पड़ता है, मैं तो गप्पे मार करके आपको कह करके 8,000 रुपए कमा लूंगा, क्योंकि 5-5 रुपए चढ़ाओगे, कम से कम 10 रुपए चढ़ाओगे, तो भी इतने लोग चढ़ाओगे तो कम से कम 2,000 रुपए रोज जाएंगे रोज के। उनका तो बिजनेस हो गया, पैसा हो गया। पैसे से उनको खुद को मालूम है कि इससे कुछ होना नहीं है, और आपको मालूम पड़ गया 5 दिन से सारा कुछ क्या फर्क पड़ेगा, चलो दे दो। इससे अभाव दूर नहीं, वो गुरु नहीं कर सकते। गुरु वह है जो आपकी समस्याओं को समझे, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों में साथ हो, गुरु वह है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए उस साधना को समझाए, उस मंत्र को समझाए जिसके माध्यम से वो तकलीफ दूर हो। Lord Rama did not put up a board highlighting his name, and neither Lord Krishna did any such thing in order to make his name immortal. Even Lord Buddha did not put up any such display board, but still he lives on. Every one among us remembers his name. He is still alive amongst his disciples, spread all over the world in over 27 countries. His body died, but he lives on, and you too can live on through the medium of sadhana. Even Rama accomplished sadhanas, living for 13 years in forests with yogis and ascetics. Krishna accomplished sadhanas in the hermitage of Guru Sandipani. Lord Buddha lives on through the medium of sadhanas. Lord Mahavira lives on. Shankaracharya, Gorakhnath, all live on, and even you can become immortal through sadhanas. But sadhana cannot be learnt by going to a temple. One should go to a temple. I do not ask you to stop visiting a temple. One should give away charity. One should help the poor. One should listen to preachings. One should earn money, because all these things are necessary for a householder. But through them you cannot live till eternity. Through them you cannot attain joy, and you cannot achieve totality of life. And if there isn't totality, then your life is imperfect. The only way to it is sadhana. Sadhana is something distinct from preaching and from mantras. If you keep chanting Hare Ram, Hare Krishna 2000 times daily, if you say that devotion means just praying before God, then it is not so. It is not necessary that He will appear before you. You may pray as much as you wish. A beggar approaches you and begs for alms in a humble voice, with his eyes filled with tears, and says, I am hungry. My children are starving. Please give me some money. If your heart fills with pity, you shall give something to him, otherwise you won't. It all depends upon you. But if a person comes before you and threateningly says to you, I am hungry and I want 5 rupees at all cost, you will think that it would be better to give him something, and you do so. When you are devoted, then it is not necessary that your devotion would be so deep that God would surely grant totality to your life. But in sadhana, you are sure to achieve success. It cannot happen that you perform a sadhana and do not achieve totality of life. And it cannot happen that deficiencies fail to be removed from your life. When can we do sadhana? Sadhana is only possible when all the deficiencies and shortcomings of your life are removed. If you are starving and have no food, then you cannot concentrate even if you sit down with your eyes closed. Once there was a very tyrannical king
who was very cruel and despotic. One day he called 5 Muslim and 5 Hindu priests and asked them, "What is God like? What is the form of your Allah?" The priests replied, "What do you ask? What is the form of God? How should we tell you?" "Well, your highness, God can be in the form of Rama with a bow and arrow in his hands, and he may be like Krishna with a flute in his hand." The king said, "No, no, God must be but one. He cannot have 50 forms. What you speak of are different forms. Tell me, what is God like?" The priest said, "We have told you that he has different forms. God may be with a flute in his hand or with a bow and arrow in his hand. God may also be in the form of Durga, Bhavani, Jagadamba, or a form with 8 or more hands." The king persisted, "No, this cannot be. All of you tell me, what is God like? What is his actual form? He must be one, for Brahma is one." But none of the priests could satisfy the king, and all of them were put into prison. They were given only water to drink, no food was given. One day passed. The Muslim priests started praying to Allah. The Hindu priests prayed to Rama and Krishna. Thus 2 days passed. All of them were worried as to what would happen to them. They kept praying. The next day they forgot their prayers and started to worry when they would get some food. What was their fault, they thought. One more day passed and they started shouting for food. All of them forgot their gods and only cried out for food. They stopped praying. On the 5th day, all of them lay on the floor due to weakness. Whenever they closed their eyes, all they saw was round loaves of bread. The king had them brought before him and asked again, "What is God like?" All of them answered in unison, "God is round, like a loaf of bread. And if all of you are starving and I teach you sadhana, then all that shall appear before your eyes will be food. Hence, first it is necessary to remove all shortcomings in your life through sadhana, and we shall achieve totality only when all the scarcity in one's lives is removed. This is necessary, for we are just householders. If we had been ascetics, then it would not have mattered. If I had been an ascetic, I would have said to you, 'Leave your house, come with me to Haridwar.' You would have said, 'Your Holiness, you are an ascetic. It is fine with you to say so. But I have a daughter and have to get her married first.' You have no daughter. What do you know of worldly responsibilities?" And all this is true, for an ascetic cannot know all this. He cannot understand the responsibility of having a daughter. He cannot understand all the problems faced in a family life. Only you can understand all this. An ascetic does not know what hunger is, because wherever he goes, people offer food to him in devotion. The ascetics are healthier than us, while we have to struggle for food. Their cheeks are full, while ours are sunken. No ascetic has to go hungry, while we always have to worry about food, clothing, and all other tensions which fill our life. This is because they do not have to struggle for food. They get it free, while we have to toil hard, and then too we manage to earn just enough to fill our bellies. Hence, sadhana is a process of removing all the shortcomings of life. If you are ill and I ask you to accomplish a sadhana, then you cannot carry it out. How can you do penance when you can't even speak out due to incessant coughing? If you do not have a son, you cannot accomplish a sadhana because you shall always be worried about having a child. If you have a daughter of marriageable age, then too you won't be able to concentrate your mind. If I ask you to go and meditate closing your eyes, and you have a quarrelsome spouse,
Then as soon as you sit down in meditation, she will start shouting at you. I told you, he can teach nothing. Of what use is all this sitting with your eyes closed? Why don't you go to the shop? This is why all problems of life should be first sorted out. The verse which I had recited in the beginning means that a guru must help in removing all the problem from one's life through sadhana, and he is a guru only if he is able to do so. Those who just preach and leave are not gurus. Preaching is just a means to earn a living, because if I preach before you, you shall offer 5, 10, 20 rupees. And if you offer 200 or more rupees daily, then I shall earn at least 8,000 rupees in a month, which is even more than what a collector earns. I do not have to work while you have to sit in your shop all day long. I will give a discourse, speak a few words, and will earn 8,000 rupees. But this way your problems will not be solved. Such a person, in fact, cannot be a guru. Guru is someone who can understand your problems. Guru is one who remains with you through all ups and downs of life. Guru is one who explains such sadhanas to you through which all your problems can be solved.